So what is up, guys? We are back here with our another video. So today's video will be about iPhone 12, the legendary iPhone 12, the iPhone 12 128GB. I bought it from Flipkart Sale and I think मेरे को जो प्राइस मिला है वो iPhone 12 के अकॉर्डिंग iPhone 12 128GB के अकॉर्डिंग मेरे को द बेस्ट प्राइस मिला है अभी तक का. और डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी विद the amount I paid for this iPhone. So here it is. So this is how it looks like from behind. So let's keep this phone aside and check what are the other sports content. So as usual there is this type C to lightning cable, as they have replaced it from the USB 2.2 to type C cable. And the other thing is this injector tool, some paperwork and one Apple sticker. तो अब इन्होंने Apple sticker भी कम कर दिया है, पर कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं. सो लेट्स कीप दिस आल्सो असाइड एंड जंप ऑन टू माय न्यू iPhone 12. सो दिस इज द iPhone 12 and this is the feeling, my god, this is the feeling to unbox a new iPhone 12. Let's just boot up it quickly. तो मैं जस्ट ये फ़ोन अभी जल्दी से बूटअप कर लेता हूँ, ठीक है. एक साथ सब कुछ अपना एप्पल आईडी वगैरह इसमें लॉगिन कर लेता हूँ एंड वी विल बी राइट बैक. सो साइन इन हो चुका है अकाउंट में एंड दिस इज हाउ this phone looks like. Nothing new in here. And I bought the 128GB version. Let's just check the storage. How much do I get? Storage 17.5GB और 128GB used. Of course इसमें मेरा थोड़ा सा ना मैंने डेटा भी डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा हो चुका है. सो इतने सारे ऐप्स हैं मेरे इसमें. लेट्स जस्ट टेक सम पिक्चर्स फ्रॉम दिस फोन. One portrait photo. So these are the photo samples. I will add these to the video after this. So earlier, like initially, I thought कि यार जब इतना मैं खर्च स्पेंड कर ही रहा हूँ तो है ना, why not should I go with the iPhone 12 Pro, as the iPhone 12 Pro does also consist the LiDAR sensor and the extra third lens. So जब मैंने देखा वहाँ पे iPhone 12 Pro, मैं एप्पल स्टोर चला गया था पहले, फ़ोन ऑनलाइन उसका ऑर्डर प्लेस करने से पहले एप्पल स्टोर चला गया था. वहाँ पे जाकर मैंने जब iPhone 12 Pro चेक करा तो उसमें iPhone 12 Pro में ना iPhone 12 से बेजल्स थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड लगे थे. यू कैन सी द बेजल्स राइट नाउ, ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू iPhone 12 Pro और 12 Pro Max.
मैं सोचा नहीं, ऑब्वियसली 12 प्रो मैक्स तो मैं बाई नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ आई वॉज थिंकिंग अबाउट द iPhone 12 प्रो। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं यार बजट थोड़े से ब्रॉड हैं, ठीक है ओके, तो वही बात है ना, यूज़र एक्सपीरियंस वाली बात होती है। ठीक है, तो मैंने लाइक आई जस्ट ड्रॉप द आइडिया ऑफ iPhone 12 प्रो एज लाइक मेरे को उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा स्पेंड करना होता, और फिर उसके बाद मेरे को थोड़े से ऐसे मोटे बेजल्स मिलते, तो इट लाइक एस्थेटिकली मेरे को ज़्यादा थोड़ा ना पसंद नहीं आया, तो आई जस्ट ड्रॉप द आइडिया ऑफ गेटिंग एन iPhone 12 प्रो एंड बॉट placed the order for this iPhone 12 128GB instead of iPhone 12. So I'm very much happy to get this iPhone 12 128GB at its price. So the price was 72,999 on Flipkart for this iPhone 12 128GB, but I used SDFC debit card I think, and I got like 1,000 rupees instant discount. So this phone cost me around 71,999. Sorry, it cost me around 71,999, and this phone was like, I feel this phone is very very value for money for me at its price. That is pretty much it guys for this video. I hope you all liked this video, and if you did, please consider subscribing my YouTube channel. You can also like and share this video to your friends and family, and you can also comment in the comment section for like which type of video you need in future. And I'm Technogram, and I'm signing out for today.